Good morning. I'm waiting for other peoples to come live. Okay, let us start. Last day I discussed about the introductory concept of a database, and particularly I was focused to handling MySql database in Python Anywhere environment website, and I told you that the available platform to handle MySQL database in Python Anywhere is the use of MySQL shell client. Using commands you can do, and I told that if you have a local database available, then shell also you can operate on that, and PHP myadmin can also be used for this connection, or any client software if available that can be used for this purpose. I also told told last day of the use of database information schema, that it holds all the information about the database, and about different data the MySQL database is containing in different set of tables. Mean almost all the information about the database strategy and data it is containing is provided in information schema. And let me keep on writing this. I told information schema is a default database in MySQL that holds complete information about the data stored and data stored data stored about the data stored and
data stored, the structure of the databases created, and different settings of MySql environment. ये मैंने बताया था। आज बहुत कम लोग ऑन लाइव दिख रहा है भाई, क्या बात है? जिनके पास मेरी बात नहीं पहुंच रही होगी, मैंने लिख करके पूछा है, क्या बात है आज बहुत कम लोग, दो तीन ऐसे करके लाइव दिखाई पड़ रहा है भाई। जल्दी आओ तब तो फिर I may, I think there is your session, your presence is coming and going, coming and going. I can expect that there may be some network problem at your side. Anyway, if there is a problem, then what can be done? You also can do nothing. So I am continuing my work. You can refer later on also. These pauses in the middle are well expected because it will go in the recording also. No problem. Let us start. You will watch later on. So about information schema I told. Then I also discussed, along with the create table, you have some of the structure related commands I discussed, like some important commands I discussed, like show databases. This is used to show all the databases in which the active
user, yeah, the user has access permissions. Then use database name. This is used to open the desired database. Then I told about show tables. This is used to get the list of tables currently opened database holds. और एक लास्ट में मैंने बताया था आपको डिस्क्राइब टेबल नेम shows table structure. इतनी बातें मैंने पिछले दिन आपको बता दी थी. ये पेज भी मैं मॉडिफाइड जो है वो भेज दूंगा. So this was the overall last day's discussion, and coming to Python Anywhere. Let me do login. The Now last day, since I opened the two consoles, it is my console, MySql console is shown here. I can directly come. These are the things last day I discussed. These were the commands. Let me zoom it and then to show you. See at the bottom, this was the structure I have created. Create table, sales data, sales date of date type, region varchar of 20 characters, rep varchar of 20 characters, item varchar of 20 characters, unit as a small int, unit price as float, and total as float. This was the table created. After creating table, I have given the command show tables. This show tables is showing the list of tables in the database train. Then I use the command
describe sales data, and this was showing the structure of the table you have just created. Now, here at the time of creation, let me discuss about altering the table also. Like suppose some field you want to drop, some field you want to delete. Alter table is the command. Alter, चलो इसके पहले मैं जरा एक बार किताब आज मैं ओपन मैंने खोज जो प्रॉब्लम था उसको सही कर लिया. इसको थोड़ा एक बार देख लो कि 11th में क्या क्या था. Database concepts you may have seen also, but at my end I want to confirm this. You may not be seeing the characters properly, so I'm showing and reading and pointing out important things. This is telling about the file system, that the organization of digital storage in secondary storage media is called the file system, and this contains different types of information that it is telling. File system can be understood as a container to store data in the computer. Files can be stored on the storage of a computer system. Contents of file can be text, computer program code, comma separated values, likewise pictures, audio, video, web pages, etc. Now this is showing a tabular data in a file. Now it is telling file system becomes difficult to handle when number of files increase and volume of data also. This file system your book is describing, that is another thing. An actual meaning of file system in computer terminology is a little bit different. Even database is also the part of file system. So how can you files to compare database in that context? File system is, for your information, I am telling the actual information about the file system, that file system is the logical layout created on the secondary storage device for the storage of files. उसका असली नाम फाइल सिस्टम है. जैसे FAT32 पेन ड्राइव में जो फाइल सिस्टम होता है, that is called FAT32. It's an organization of it's the set of rules according to which files are managed. विंडोज में जो फाइल, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं. मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. विंडोज में जो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है वो है NTFS. NTFS is the file system in Windows. Linux में ext3 or 4 are currently used file system. ext is the file system used in Linux. ext4 is currently running for different versions of Linux. So these are the popular file systems which are available, and they provide the rules to get different files organized in the secondary storage device. One thing you know, that in computer whatever the digital storage is made, ultimately it goes as a file. वो चाहे आप ऑडियो बनाएं, वीडियो बनाएं, पिक्चर स्टोर करके रखें, डेटा स्टोर करके रखो, प्रोग्राम स्टोर करके रखो, कुछ भी जो स्टोर होगा, वो जो ब्लॉक होगा स्टोरेज का, स्टोरेज ब्लॉक, स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज एंटिटी इज कॉल्ड द फाइल.
and the organization of the disk where files are kept is called the file system. तो इस मीनिंग के तहत ये फाइल सिस्टम को ले रहा है, ना कि टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फाइल सिस्टम के बारे में ये बता रहा है आपका बुक. This is telling only about the organization of files in the disk, not technically, internally, what the file system points out. So this is telling the limitations of the file system. Difficulty in access, data redundancy. Redundancy is for duplication. आप देखते हैं कि एक ही फाइल कई जगह कॉपी हो जाता है. अब जैसे मैंने आपको कॉमन वर्क एरिया में, स्कूल में कॉमन वर्क एरिया में कोई फाइल दिया पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले उसको डिफरेंट यूजर्स अपने वर्क एरिया में कॉपी बनाते हैं, जबकि कॉपी भी उसी हार्ड डिस्क सर्वर के ही हार्ड डिस्क में है और ओरिजिनल जो जिस लोकेशन से वो शेयर्ड है वो भी उसी जगह पर है. तो इट ऑक्युपाइज अननेसेसरी स्पेस एंड क्रिएट्स डुप्लीकेट्स. डेटा इनकंसिस्टेंसी, अब एक जगह चेंज किया दूसरे में चेंज नहीं किया तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है. आइसोलेशन संभव नहीं है, डिपेंडेंस ज़्यादा होगा, डेटा शेयरिंग की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है. ये सारी चीज़ें मैं पिछले दिन बता चुका हूँ. अब डेटाबेस मैनेज, वास्तव में जो ये बातें मैंने पॉइंट की, ये जो आपकी किताब में दिया हुआ, ये मैंने टेक्स्ट फाइल के कंटेक्स्ट में किया, बिकॉज टेक्स्ट फाइल इज अ कॉमन वे अदर देन डेटाबेस फॉर द स्टोरेज ऑफ कंटेंट्स और टेबुलर डेटा. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ये दिया हुआ है. ये सारा टेबल स्ट्रक्चर होगा तो हेड होगा तो की होगा, so many things. Last day I already explained. Now key concept of DBMS, database schema एक स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का, डेटा कंस्ट्रेंट्स होगा, डेटा का वेल डिफाइंड हेड होगा, डेटा डिक्शनरी होगा, माने डेटाबेस का एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन होगा, डेटाबेस इंस्टेंसेस होंगे, क्वेरी किया जा सकता है, डेटा मैनिपुलेशन होगा, डेटाबेस इंजन. ये इंजन शब्द से मैंने बात नहीं किया, वास्तव में मैंने कनेक्टर शब्द का प्रयोग किया उसके लिए. कि डेटाबेस तो एक डिप्लॉयमेंट है, उस डिप्लॉयमेंट से अटैच होने के लिए, उस डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक कनेक्टर या एक समझ लो कि ब्रिज होता है, जिसके आधार पर आप सारा चीज़ डेटाबेस में पास करते हैं. इस ब्रिज को ही इंजन बोल रहा है. ये रिलेशनल मॉडल में ये सारा देखो, 3 tables, it is considering guardian, student and attendance, and they are interrelated to each other. So information stored in different tables can be interrelated. This is the relational model. देखो यहाँ शायद तुम्हें पढ़ा नहीं जाए, लिखा हुआ है फैक्ट्स अबाउट रिलेशन गार्डियन. मैंने पिछले दिन लिखा भी था आपको कि टेबल के लिए ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है रिलेशन, है ना. तो हियर गार्डियन इज अ टेबल बट इट इज टोल्ड एज रिलेशन इन RDBMS मॉडल. Attribute characteristics of parameter for which data are to be stored in the relation. टेबल में जिन हेड्स के नीचे डेटा स्टोर किया जाता है, they are called fields also and attributes also. Tuple, देखो दिया हुआ है, each row of data in the relation is a tuple. It is also called record in general. And domain is the area, the range, the space from where data is collected. For example, if the table is specified for the students, one who is the student can have, though name, father's name and date of birth is specified in the table. Suppose 3 fields are there in the table, but still if the title is given student for the table, it defines the domain. इसके बारे में मैंने सीधे शब्दों में बात नहीं की थी, मैंने restricted शब्द का प्रयोग किया था कि it holds
restricted data. तो जो space provided है, you can take and you can pick up data from that working space only. For example, student data can be got from the students only. Degree and cardinality के बारे में मैंने बताया था आपको. The number of attributes in the relation is called the degree. That means number of fields or attributes is called the degree. Cardinality is the number of tuples in the relation called cardinality. टेबल के कुछ प्रॉपर्टीज इसने दिए हैं. नाउ कीज के बारे में मैंने पिछले दिन बात नहीं की थी, इसको अभी होल्ड करके भी रखो, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ चीजें हो जाएंगी तो की के बारे में समझ सकते हो. दो इन द प्रीवियस सेशंस ऑफ क्लास 11th I discussed well about the keys and relation. So here this database is ending, this chapter is ending. Now एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इसके मेन पॉइंट्स बोल करके कंफर्म कर देना चाहता हूं, ताकि यू कैन मेक अ कंफर्मेशन दैट यू आर नोइंग दीज थिंग्स. A file in a file system is a container to store data in a computer. File system suffers from data redundancy, data inconsistency, data isolation, data dependence, and controlled data sharing. DBMS is a software to create and manage the databases. Database is a collection of tables. Database schema is the design of a database. A database constraint is a restriction on the type of data that it can be inserted into the table. Database schema and database constraints are stored in database catalog. ये information schema catalog ही है. Whereas the snapshot of the database of any given time is the database instance. अलग अलग जो आप database create करते हैं वो उसका उस constraint के आधार पर तुम्हारा एक object है जिसको आप touch करते हैं, जिसको आप handle करते हैं. Query is a request to the database for information retrieval and data manipulation, that is insertion, deletion or update. It is written in a structured query language SQL. Relational DBMS, that is RDBMS, is used to store data in related tables. Rows and columns of a table are called tuples and attributes respectively. A table is referred as a relation. Destruction of data on the destructions on data stored in RDBMS is applied. क्या लिखता है भाई? डिस्ट्रक्शन ऑन डेटा, आई डोंट नो. डिस्ट्रक्शन का तो मैं यही मतलब जानता हूं कि नष्ट करना. तो नष्ट करने के लिए कैंडिडेट की प्राइमरी की क्या जरूरत है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा को भले मान सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन RDBMS is done by the use of keys such as candidate keys, primary keys, composite primary key and foreign key. You will recall your previous experience right now if so, otherwise later on I will discuss. Primary key in a relation is used for unique identification of tuples. Foreign key is used to relate two tables or relations. Each column in a table represents a feature or attribute of a record. Table stores the information for an entity where a row represents a record. Entity कहने का मतलब एक particular topic पर table information store करके रखता है, और जो attributes होगा वो उसके specific properties को define करता है. Each row in a table represents a record. A tuple is a collection of attribute values that makes a record unique. And a tuple is a unique entry, whereas attribute values can be duplicate in the table, and SQL is the standard language for RDBMS system like MySql. So इतनी चीजें आप confirm मान सकते हैं कि आपको मालूम है. Now this is another chapter, SQL. जो नाम मैंने बताए थे उसको मेंशन किया है. There are many RDBMS such as MySQL, Microsoft MySQL Server, PostgreSQL,
ओरेकल एटसेट्रा, कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं है, इतना ही मैंने भी लिखे थे, किताब में भी यही लिखा है। एक आध को नाम जोड़ देते हैं, जैसे ओपन ऑफिस बेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस is also up to some extent works like RDBMS। अगर आपके पास ऑफिस है और एक्सेस है उसमें, तो एक्सेस में क्रिएट किया गया डेटाबेस पर भी RDBMS के सर्टेन रूल्स लागू होते हैं, एंड अप टू योर लेवल access file or access database can also be handled like a relational database. Even you have, suppose an access file created Microsoft के environment में, then you can import data from access files also to Python environment using connectors. So अभी ये इंस्टॉलिंग MySql पता नहीं क्या क्या ये दिया, ठीक है। ये MySql प्रॉम्प्ट आ गया, यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में char, varchar, int, float, date, and this given. Create a database, create database name, then create table, last day मैंने बताया। डिस्क्राइब टेबल के बारे में मैंने बताया, ऑल्टर टेबल की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखा दूं क्या बोल रहा है ये, क्योंकि इसी पर बात करनी है अभी। After creating a table, we may realize that we need to add, remove an attribute or modify the data type of like this. You see here, at the bottom it is written the syntax I am reading: alter table, table name, add, modify, drop, attribute 1, attribute 2 and so on. अब यहां पर हम आ जाएं, in Python anywhere, alter table, the keyword, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि keywords को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। alter table, हमारे पास तो एक ही टेबल है अभी created, sales, that right now with you I have created sales। मान लिया हमको टोटल का फील्ड हटाना है, नहीं चाहिए, देन ड्रॉप, ड्रॉप, अच्छा देखो मैं लिख ही रहा था, टोटल, सेमीकोलन, प्रेसिंग एंटर। अब देखो क्या मैसेज दे रहा है, ये कह रहा है कि सेल्स डेटा है, तो टेबल ही मैंने गलत दे दिया, सेल्स डेटा, देखो ड्रॉप टोटल मैंने लिखा, हालांकि मैंने दिया था स्पेलिंग में कि विदाउट केस ऑल्सो दिस हैज एक्सेप्टेड। सो ऑल्टर टेबल सेल्स डेटा ड्रॉप टोटल आई हैव रिटन, and now I am describing sales data. You see the table, a particular column has been removed. इस रिमूवल में आपका डेटा भी चला जाएगा, and that cannot be recalled back by normal means. अब मान लिया हम चाहते कि ना गलती हो गया, तो वी विल ऐड ऑल्टर, या उसी को ले आओ पहले, ऑल्टर टेबल सेल्स डेटा, ड्रॉप की जगह ऐड,
total, मान लिया इसको दे दिया फ्लोट, प्रेसिंग एंटर, ये ऐड हो गया. नाउ व्हेन यू विल डिस्क्राइब सेल्स डेटा यू विल फाइंड दिस. तो ये एक तरीका भी हो सकता है कि मान लो किसी टेबल में किसी कॉलम का पूरा वैल्यू तुमको ब्लैंक करना है, तो उसमें एक बार उसको ड्रॉप कर दो, फिर से उसको इंसर्ट कर दो. तो वंस यू विल ड्रॉप, एवरीथिंग विल गो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलम, एंड व्हेन यू विल ऐड द सेम कॉलम अगेन इट विल बी अपीयरिंग ब्लैंक. और यहाँ पर एक साथ दो तीन भी कर सकते हैं, लाइक टोटल फ्लोट यू हैव गिवन, कुछ अननेसेसरी फील्ड्स भी ऐड करो, लाइक सपोज अर्थ फर्स्ट फ्लोट, सेकंड डेट. तो दो फील्ड में एक साथ डाल रहा हूं ऑल्टर टेबल के साथ, प्रेसिंग डेट, ब्रैकेट मिलेगा क्या, कॉमा से तो होता है भाई. हाँ, इसको टपल के रूप में देना था, मैंने ब्रैकेट में बंद करके दिया एज टपल, then you see it has been taken, and when you will describe the table, then you see this first is added and second is added, दोनों एक साथ ऐड हो गया. अब यहां पर अगर आपको मॉडिफाई करना है तो दिस इज मॉडिफाई, मान लिया सेकंड, मॉडिफाई सेकंड, मान लिया इसको हम दे दिया INT. सेकंड अभी डेट है, मैंने उसको मॉडिफाई करके INT कर दिया. तो अब व्हेन यू विल डिस्क्राइब द टेबल then you will see it is not remaining like date, it has been converted to INT. देखो सेकंड ये INT हो गया, फर्स्ट जैसे है वैसे ही है. अगर आप फर्स्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, सपोज यू आर राइटिंग मॉडिफाई फर्स्ट varchar 100 कैरेक्टर्स का varchar मैंने दे दिया. See, this has been done, and when you will describe the table you see फर्स्ट जो है varchar 100 हो गया. So इस प्रकार with the help of alter table you can modify the structure, you can modify the structure of the table. Alter table is the keyword. So this is all related to the structure creation and structure modification. You are not working with data right now. Whatever I have discussed, you worked with the structure only. Here two more commands I want to recall. One was the truncate. Truncate is a command that removes all the data of the table, and drop table is the command
that removes the complete table structure along with data. So चूंकि अभी मैं डेटा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए we can consider drop only here, that as create is for creating the table, alter table is for modifying the table, and drop table is for deleting the table. Like suppose here we have show tables. Then you see we have first and sales data. Describe first. Then in first May you are finding two fields are there, name and age. हम चाहते हैं कि first को हटा दें. Then drop table first. Pressing enter. Table has gone. अब आप अगर show tables करेंगे, then you see only sales data is coming. So create, modify and delete for tables. यहाँ modify के नाम से कमांड नहीं है, बल्कि कमांड तुम्हारा है add के कमांड तुम्हारा है alter के नाम से. Now once the table is created, using SQL command you can insert data into that. मैनुअली इसको पहले देख लो, मैं लिख करके बता दूं. See, when you are doing data insertion in the table structure must be known to you, because whatever the heads you will specify, the value will go exactly in that. To put new data from the domain in the table, मैं रिलेशन भी लिख देता हूं ताकि बार बार याद रहे. बड़ी दिक्कत होता है भाई, बार बार जूम हो जाने से और गायब भी हो गया. The command insert is used. सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स इसका हो गया. Insert into table name bracket list of fields separated by comma, bracket close.
उसके बाद values, whatever I am writing in capital, these are the keywords given in the same way, values. Then bracket again will start. List of values in the same sequence, है ना, कॉमा, या लिस्ट ऑफ वैल्यूज के बदले में इसको मैं ऐसे लिखूं, tuple of values in the same sequence as fields, comma, tuple of values in the same sequence, comma, and so on. लास्ट में ब्रैकेट क्लोज. अब देखो इसको, हियर नोट मैं यहां पर कर दूं, हियर list of fields after table name is optional. When not given, all the values for, या इसको ऐसे लिखे, values for all the attributes must be given in the same sequence. अभी इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, जब तक इसको देखेंगे नहीं करके तब तक समझ में नहीं आएगा. हमारा जो स्ट्रक्चर है, चलो ये पॉइंटर को नीचे रख देते हैं, इजीली हम इसको हैंडल करें. This is our table description is describe sales data. This is coming, ऊपर में एक सेल्स डेट केवल चला गया. Insert into sales data values. I am not giving the list of fields. When they are not giving, then you have to specify value for all the fields. Single quote,
First is sales date, comma, then region, इसमें यही गड़बड़ है, फिर से लिखना पड़ेगा भाई, ये एरर आ गया। Insert into sales data values (2013-4-23) that I have given, कोट नहीं लगाया, quotation, comma, region, suppose central, then REP, then item, I think it was pencil, then it is unit cost, let us say ₹10, कोटेशन मार्क पे देने की जरूरत नहीं है, 10, comma, unit is मान लो 100, then total suppose 1000, first is ऐसे ही है, varchar है इसलिए x दे दिया, और सेकंड int है इसलिए 0 दे दिया. So the values for all the fields are given. एक बार मैं जूम करके दिखा दूं, देखो, insert into sales data values date and this are coming. अगर इसको सेमीकोलन दे करके एग्जीक्यूट करेंगे, अब क्या हुआ, कहां पर छूटा, ब्रैकेट तो मैंने दिया, insert into sales data values this central pencil this, हाँ, रन कर दिया. It is giving query okay, one row affected. Now when you will see the table, select asterisk from sales data, then you see whatever you have given has been inserted. थोड़ा बड़ा है इसलिए वैसे दिखा रहा है. अब अगर इंडिविजुअल फील्ड के लिए इंसर्ट करना है तो तुमको फील्ड देना जरूरी है. इंसर्ट इनटू सेल्स डेटा, लेट अस से आई एम गिविंग ओनली फर्स्ट कॉमा सेकंड, दो फील्ड में केवल वैल्यू डालना है. वैल्यूज ABC, 78, ऐसे ही डमी वैल्यू, एंटर. आप देखेंगे क्वेरी ओके, one row affected. When you will see the description, then you see it is coming. दूसरा रो जो बना वो बाकी सब में नल 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 है. सेकेंड रो आप देखिए
null, everything is null, only the values are at the end ABC and 78. अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यू भी डालना चाहते हैं तो सेपरेटेड बाई कॉमा यू कैन स्पेसिफाई। इसको एक टपल के रूप में दिया, कॉमा दूसरा टपल ए कॉमा 6, दूसरा टपल फिनिश, फिर कॉमा डाला, देन पीपीपी कॉमा 67, ये टपल पूरा, और इसको भी बंद कर दिया। ऐसे नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, सिंगल ही लीजिए। हाँ, हो सकता है ये तरीका, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है। मैंने कॉमा के बदले में यहाँ पर डॉट डाल दिया। कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, ठीक है। इंडिपेंडेंट टपल के रूप में आइए, एज इंडिपेंडेंट टपल आई हैव गिवन, पे अटेंशन, मैं सेलेक्ट अभी नहीं कर सकता हूँ, माउस मैंने नीचे रख दिया। तो वैल्यूज, उसके बाद 1 टपल कॉमा सेकंड टपल कॉमा थर्ड टपल। आई थिंक कि तुम देख पा रहे होगे साफ साफ, मेरे तो मोबाइल में भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, मॉनिटर पर भी साफ नजर आ रहा है। इंसर्ट द before the last MySql prompt, you see after MySql prompt it is written insert into sales data first second values ABC 78 as a tuple, AAAA comma 6 as tuple, PPPP comma 67 as tuple। as tuple कहने का मतलब वो राउंड ब्रैकेट्स में बंद है। तीनों मैंने दे दिया। अब आप देख रहे हैं क्वेरी ओके, 3 rows affected it is writing, and when you will see the description of the table contents, you will see that ABC is again inserted, then AAA and PPP have got inserted. So in this way data is inserted in the table. So here I am winding up the session, but again I will say that it is necessary, मैंने थोड़ी सी ही चीज़ें आज बताई हैं, कल की चीज़ें मैंने रिपीट की, किताब मैंने दिखाया, और बस एक कमांड आज मैंने डिस्कस किया, दैट इज इंसर्ट। तो अब तुम्हारा काम है एक बार किताब खुद से भी देख लेना, सारा चीज़ कंफर्म कर लेना कि हाँ ये सारा चीज़ आप जानते हैं। अगर कोई चीज़ किताब में ऐसा लिखा हुआ हो जो तुमको लगता हो कि मैंने नहीं बताया, तो आप कृपया करके क्वेरी कर लेंगे, पूछ लेंगे कि उसमें क्या होगा, क्या उसका मीनिंग है। नहीं तो कीप इट फॉर ग्रांटेड यू आर नोइंग, मीन्स आई विल कीप फॉर ग्रांटेड दैट यू आर नोइंग। along with that the database you will create, and table you will create, rows you will insert in the way I have told. तो इतना आप कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। And today's session I am winding up. Have a good day. Thank you.